Assalamu alaikum, online participants. Do you hear me? Please thumbs up. Yes. Oh, Yes. perfect. Assalamu alaikum, everyone. On the behalf of our team, I invite you all on 3-day hands-on workshop on applied ML 360-degree integrative solutions in computational sciences, engineering, climate change, and genomics, organized by Dr. Muhammad Shehzad from Science Department NUST, Dr. Zakir Khan from Air University Karachi, and Dr. Hayat Ali from SNS Department NUST. Let's begin with the recitation of Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن Sadaqallahu Azim. The objectives of this workshop is to provide the participants with a strong foundation in machine learning concepts, algorithms, and tools for practical application across domains, demonstrate the role of machine learning in addressing real-world challenges in genomics, climate change, and computational research, to encourage the integrative and cross-disciplinary approaches that connect the engineering, computational sciences, and sustainability through machine learning, to foster the innovation and problem-solving skills through hands-on capstone projects where participants design and present ML-based solutions. There are total 30 participants that have registered for this workshop. Out of these 30 participants, 67% are male and 33% are female, while 60% of the participants attend this workshop in FTF mode and 40% participants attend this workshop through online. The application of machine learning is not limited to only one industry. It is applicable to different multiple domains like manufacturing, healthcare, e-commerce, automobile, insurance, transportations, and many more by enhancing the I'm so sorry by enhancing the automatic tasking. Now I feel honored to invite our honorable guest, Dr. Mia Ilyas Ahmed, HOD Department of Engineering, School of Interdisciplinary Engineering and Sciences, NUST. He holds a PhD in Control System from Imperial College London, completed a postdoc at Max Planck Institute, Germany, and served as an editor for the International Conference on Climate Change and Sustainable Development. His expertise span computational methods, control theory, and energy optimization. I would like to invite Dr. Mia Ilyas Ahmed to officially inaugurate this workshop with us fruitful thoughts. Thank you so much. Distinguished guests, speakers, participants, and my dear students, Assalamu alaikum, and a very good morning. It is an honor and a pleasure for me to welcome you all in science for this workshop on a very important topic, which is applied machine learning. And I think it is the need of the time to basically explore
the different applications of machine learning. I'm telling you, there are so many applications. When I was a research student, I believe there was a confusion for me to basically understand what is the relationship between different fields like modeling, applied mathematics, scientific computing, computational sciences and engineering, system identification, and machine learning. So most of them, these fields are very related. You will find them like overlapping contents in these fields. My area was basically scientific computing. I was more focused on, I would say, large analysis and design of large-scale models. And machine learning is also like a specific structured model. So basically, we learn machine learning models through data, and then once we have identified a machine learning model, then we can test it for different applications. So I will try to explain like what was my understanding and what is now fields. So my area was in modeling and simulation. So I would say that applied mathematics is the modeling of actual physical systems. Say, for example, I would like to simulate or understand the behavior of the speaker. I will try to model it, this physical system, in a mathematical format. And then I will try to analyze that mathematical model to understand the behavior of this system. So one is a system, model is a replica of the system. So we are trying to understand the behavior of the system through the model. And modeling can be of two types. We can either use laws of physics, like Newton's laws or balance equations, to model the relationship between the different quantities involved in an actual system. And once we have that relationship, then we can solve it in computer, and that solution part is basically scientific computing. So once we represent our actual system in mathematical format, that mathematical format can be algebraic equations, can be differential equations, can be a combination of these two, differential as well as algebraic equation. And then we need to solve them. So the solution part is scientific computing. And then computational sciences and engineering, which is what we offer here, the master and PhD program in science. Computational sciences and engineering is the combination of both. So like it involves modeling as well as solution to engineering tools. So like there are different engineering tools like ANSYS, MATLAB, and it helps us not only in modeling, but also solving that model. Machine learning is an extension of these two. Is an extension of, you would say, applied mathematics and scientific computing, in the sense that you are not going into that complex mathematical equations. The model structure is designed to cover these relationships. So you basically learn the relationship through data. There is a lot of information in experimental or observed data that can be predicted through these machine learning models. So a very interesting field. When I was doing research at that time, there were very limited applications, but now even mathematicians are using it. So the control community from where I was basically in Imperial College, at that time, the focus was not on, let's say, machine learning, but they were more inclined towards adaptive control, robust controls, stuff like that, which have this mathematical background. Now, I mean, people are, and the computer science community was more inclined towards machine learning. So at
I would say now they are trying to establish the mathematical relationship that is involved in these kind of complex networks of model, I would say nested functions. So you will hopefully get some clarification in this 3 days activity. I hope the next session by Dr. Shehzad will further clarify this introduction of machine learning. But I am here to just officially just give my overview on what this machine learning is and how it can be used. I mean, at the moment, last year I visited electrical department final year project exhibition, and most of the electrical students were using machine learning in their projects, and also mechanical students also visited their FYP exhibition, and most of them were also using machine learning. So almost everyone on engineering side is using it. So it is giving us very useful results. I would say the important thing is just this understanding that for machine learning, existence of physical system is important. Otherwise, you will not be able to get the data. So you should have some physical system, do some experiments on that to get data. And once you have data, then you can identify a relationship between that data. So that is the basic concept. I hope that you have a very interesting session here for the next 3 days. I would also appreciate the organizer, Dr. Shehzad, and other team members. I think that we should have this session in a way that not only we learn new concepts, but we also try to implement them when we go back and are trying our own research problem. So once again, thank you so much, and a very warm welcome to science. I hope you enjoy your time here. Thank you so much. Thank you so much. This is the overview of day 1 activities, which include a talk from a guest speaker, some hands-on session, and lab practice as well. Now I request Dr. Mohammed Shehzad to please take up the stage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, welcome to all of you, and thank you for your kind words, Dr. Mohammed Ilyas. And sir, welcome to my dear and respected teacher, Dr. Wasim Haider. और मेरे ख्याल में जो फॉर्मल डिस्कशन वगैरह थी वो तो हो चुकी, वेलकम हो चुका, थोड़ा सा हम इनफॉर्मल वे से जाते हैं ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि टीचर के सामने बोलना
ऐसा है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाने के बतराते थे। सर विद योर परमिशन अलाउ करें तो इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जो यहाँ पर आज आपके गेस्ट स्पीकर डॉक्टर वसीम हैदर साहब, ये मेरे टीचर रहे हैं और अभी भी हैं। और ड्यूरिंग हमने एमएस प्रोग्राम मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। तो आज मुझे एक वो कहते हैं कि फख्र या इस फील हो रही है कि मैंने आज उनको बुलाया और आज उनके सामने खड़ा होकर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल inshallah today we will discuss about introduction to machine learning. Okay, what is machine learning, what is its foundation and what is its application? Basically जो आज की हमारी इस वर्कशॉप का मेन पर्पस है वो ये नहीं कि हम जस्ट एक चीज को गो थ्रू करेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ 3 days आप कहेंगे हमने वर्कशॉप अटेंड करके आए, कोई पूछे कि क्या पढ़ा क्या सीखा। और बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप होता है कि वो आगे से खामोश होता है कि हमें तो पता ही नहीं हमने क्या सीख के आए। तो बेसिकली हम यहाँ पर जितनी भी हमारी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी आज, just two-way single way communication, it means it will be a two-way communication between speaker and you, right? और अब भी जो इस सेशन है, इस सेशन के अंदर जस्ट हम इतना अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज एआई, व्हाट आर देयर टाइप्स एंड इन मशीन लर्निंग को हम कहाँ कहाँ पे किस किस डोमेन्स के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज जी, first of all, we will discuss about the overview of AI and machine learning, and then we will discuss about what are the type of machine learning that are broadly used in every type of educational domain, and then we will discuss about what are the key machine learning algorithms कि जिस भी आप फील्ड के अंदर जाए, आइदर इन मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एजुकेशन है, मेडिकल में है, जहां पर भी आप जाएंगे ये जो ऐसे कुछ आपके पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो हर एक डोमेन के अंदर आप यूज करेंगे। हम जस्ट उनका ओवरव्यू देखेंगे, कुछ डेफिनेशन देखेंगे एंड इंशाल्लाह इन ड्यूरिंग आवर हैंड्स ऑन सेशन हम उनके ऊपर प्रैक्टिकल काम भी करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी पढ़ लिए, उनका हमने यूजेज भी देख लिया, डेफिनेशन भी पढ़ ली, उनके मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी सीख लिया, बट हम इनको रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज कर रहे होते हैं। और इवन के हमारे पास आजकल के इस करंट इरा के अंदर हम डेली बेसिस पे इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ हमारा पाला पड़ रहा होता है, बट हम ये चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या अपने जहन में परसीव नहीं करते कि दिस इज द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी सिंपल कि अगर आप फॉर एग्जांपल जितने भी यहाँ पर हमारे पास लोग हैं सबके पास एआई या एंड्रॉइड फोन तो है। जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो अमूमन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कुछ सजेशंस आ जाती हैं। दिस इज द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ एआई। आप डेली लाइफ सुबह दोपहर शाम हर वक्त उसको यूज कर रहे हैं, बट हम थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते कि वेदर इट इज एआई और जस्ट सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं, राइट? And then inshallah we will discuss about what are the AI frameworks and libraries that we will go hands on during our hands-on session. Okay, अब हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी बात आती है, अगर आप किसी भी इंटरव्यू सेशन में जाएंगे तो वहां पर एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट हम उस क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? ये जितनी भी टर्म्स हैं मोस्ट ऑफ द केसेस ये इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती हैं इन ऑल केसेस, बट इनमें क्लियर मेन डिफरेंस है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज डीप लर्निंग, कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट नाउ हम वी आर स्टडिंग अबाउट डीप लर्निंग, राइट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट वी आर डीलिंग विद द मशीन लर्निंग एंड राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो आप इसमें ब्रॉडर अम्ब्रेला के थ्रू हम लेके आएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मेन field है which is called artificial intelligence, right? Artificial intelligence very simple definition है कि आप ये कह सकते हैं it is a broader technique that representing or mimic the human intelligence, right? For example हम एक छोटा सा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, हम उसको कहते हैं, उसके सामने हम 3-4 एनिमल्स की पिक्चर्स या उनका मॉडल हम रखते हैं और हम उनको कहते हैं कि आप इसको डिसाइड करें whether it is elephant or cat or goat। जब वो सिंपली बता देता है कि इट इज एन एलिफेंट, इट इज एन गोट, इट इज एन कैट, दिस इज अ सिंपल इंटेलिजेंस। जब हम इस ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन के अंदर ले आते हैं और मशीन जस्ट सिंपली प्रिडिक्ट कर दे कि बिटवीन सम एलिमेंट्स, तो हम उसको कह देते हैं इट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमने नेचुरल इंटेलिजेंस को मशीन के अंदर एज एन आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से, अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए, हमने उसके अंदर इम्बेड कर दी। अब जो मशीन है वो एक्ट कर रही है लाइक ए ह्यूमन,
राइट। आप इसकी वेरी सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं जो आजकल सब लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग आवर एग्जाम एंड आवर असाइनमेंट, चैट जीपीटी। आप उसको एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं जस्ट लाइक अ टीचर। आप टीचर के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं सर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ नहीं आ रही, और व्हाट इज द बेसिक फार्मूला और व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सेम क्वेश्चन आप जीपीटी को भी देते हैं, जीपीटी में भी आई थिंक बेटर आंसर करता है एज कम्पेयर टू फिजिकल जो टीचर है। इट मीन दिस इज अ human intelligence or natural intelligence which is imposed into a machine and which is converted into artificial intelligence, right? This is the concept of artificial intelligence. अब देखें, जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर, एक बच्चे को जब चीज सिखाई जाती है या इवन कि जिस तरह अभी आज हम क्लास में आपको सिखाया जा रहा है, हम इस एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हैं, राइट। एक लर्निंग प्रोसेस जब हमारा चलता है, आफ्टर दैट लर्निंग प्रोसेस हम कोई चीज सिखाने वाला जो ट्यूटर होते हैं वो आपको बताते हैं, एंड देन आप उसको परसीव करते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट एक्सपीरियंस और दैट लर्निंग मटेरियल नेक्स्ट टाइम आप मेरे क्वेश्चन का या किसी भी टीचर का आंसर करते हैं। तो अब वो जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो प्रोसेस जो लाई करता है विद इन मशीन लर्निंग डोमेन एंड आर्टिफिशियल डीप लर्निंग डोमेन। मीन्स कि आपने मशीन लर्निंग डोमेन के अंदर, डीप लर्निंग डोमेन के अंदर आपने डील करना है विद दी एल्गोरिदम्स और विद द प्रोसीजर जिसके थ्रू आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। बात क्लियर? मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास एक बड़ी बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग के लिए जो हमारे पास मिस्त्री होते हैं, जो मजदूर होते हैं, बेसिकली वो काम हमारा मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग कर रही होती है। क्लियर? तो अब अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें, मशीन लर्निंग बेसिकली एन एल्गोरिथम फॉर डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस। जो सिंपल एल्गोरिथम्स हैं उनको हम कह देते हैं कि दिस इज अ मशीन लर्निंग, राइट। बट जब हम इन डेप्थ जाते हैं, इन डिटेल हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, दिस इज गॉन टू अ डीप लर्निंग डोमेन। अगर हम इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वैसे अगर देखा जाए तो एआई या मशीन लर्निंग का जो कोर्स है जो एकेडमिक में पढ़ाया जाता है उसका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 6 मंथ होता है, 1 सेमेस्टर पे स्पेंड कर रहा होता है। बट हम उसी चीज को आज विद इन 3 डेज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो हमारा लर्निंग का या अंडरस्टैंडिंग का जो प्रोसीजर होगा वो थोड़ा सा सरसरी, जिसको हम कहते हैं सरसरी से, हम इतने इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट हम जनरली उन टेक्निक्स को टच करेंगे, रीड आउट करेंगे और उनको अप्लाई करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग कि आप किसी भी एल्गोरिथम को इन डेप्थ उसकी आप जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं ले रहे होते, बट जनरली आप उसको गो थ्रू कर रहे होते हैं। बट जब आप यही कोर्स आप एक सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं तो डेली बेसिस पे आपकी 3 आवर्स की क्लास होती है और आप ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, राइट। तो दिस इज द रियल लाइफ, अगर आप कह लें एनालॉजी विद द डीप लर्निंग। जब आप डीप लर्निंग में जाएंगे तो आप सरसरी सी चीजें नहीं देखेंगे, बल्कि आप इन डेप्थ नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम योर डेटा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट नॉलेज आप कोई भी डिसीजन या कोई भी आप आउटपुट प्ले करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। ओके, देयर इज एन सम रियल लाइफ एग्जांपल जो आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे आप इसके साथ जो है ना आपका पाला पड़ता है, लाइक मैप्स एंड नेविगेशन। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल अभी घर से निकले थे, आपको यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 या गेट नंबर 10 नहीं पता था, बट आप लोगों ने क्या किया, फौरन गूगल मैप उठाया, गूगल मैप के अंदर आपने लोकेशन इंसर्ट की और उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर रहा है। जैसे ही आप गलत होते हैं, आपकी सिमत या डायरेक्शन चेंज होती है, फौरन सिस्टम अपने आप को अपडेट करते हैं और आपको रीडायरेक्ट करते हैं वापस यू आर राइट पाथ। दिस इज द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग और सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ये जो मशीन लर्निंग, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप बनाई गई है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। सेम लाइक दैट हमारे पास आजकल जो इवन कि हमारे पास मोबाइल के अंदर आप फिंगरप्रिंट है या फेशियल डिटेक्शन के थ्रू आप अपने मोबाइल का लॉक अनलॉक करते हैं, या इन मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर आप जाएं तो वहां पर अटेंडेंस भी थ्रू फेस डिटेक्शन हो रही होती है। तो बेसिकली वहां पर पीछे भी बैक एंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम काम कर रहे थे जो कि बेसिकली हमारे फेस को डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर सम फीचर्स एंड शेप एंड साइज, वो चीज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज आल्सो इन अनदर एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। And here is a very simple example of natural language processing जो आपको मैंने पहले example दे दी, जो आप एक चैट बोर्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। व्हाई? बिकॉज आप उसको एक नेचुरल लैंग्वेज में क्वेरी देते हैं एंड देन वो आपको वापस अगेंस्ट आपको रिस्पांस में एक नेचुरल लैंग्वेज में आंसर कर रहा होता है। इवन कि आप अगर चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट में जाए वहां पर आप उसको उर्दू में दें प्रॉम्प्ट अपना,
इंग्लिश में दें, आइदर आप उसको रोमन उर्दू में भी दे दें, इन दैट केस भी वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इट मींस वो बेसिकली ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे हैं एंड देन बेस्ड ऑन दैट प्रोसेसिंग वो आपको रिटर्न में आंसर कर रहा होता है। दिस इज देन जो आजकल अगर कहें तो ट्रेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। ओके, तो वो ये तो हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट मशीन लर्निंग एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, right? There are three main types of machine learning. The first one is supervised, the second one is unsupervised, and the third one is reinforcement learning. अब ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं मशीन लर्निंग की, मैं और इवन कि आप सब इस फेज से गुजर के आए हुए हैं इन अवर चाइल्डहुड, बट हम उसको परसीव नहीं करते कि आया कि हम ये उसको एक हम लेबल नहीं दे पाते कि हमने किस प्रोसेस से गुजर के आए हैं। ठीक है, राइट। अगर मैं बात करूं सुपरवाइज मशीन लर्निंग की, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होता है कि आपने, मेरे पास ये सिस्टम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इस वक्त इस लेवल के ऊपर मेरे पास एक मोबाइल भी पड़ा हुआ है, बैग भी पड़ा हुआ है, हमारे पास एलईडीज भी पड़ी हुई है, क्लॉक भी पड़े हुए हैं और टेस्टर भी पड़े हुए हैं। तो इन दैट केस मैं क्या करता हूं, मेरे पास अगर एक छोटा बच्चा आएगा, मैं उसको कहूंगा बेटा ये मोबाइल है, ये एलईडी है, ये टेबल है, ये बैग है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक आइटम को स्पेसिफिक टैग इंसर्ट कर रहा हूँ, टैग लगा रहा हूँ कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, को वो जो लेबल्ड इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर वो जो बच्चा अगर आएगा वन टाइम उसको होगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम मैं उससे पूछूंगा बेटा ये क्या है, तो बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस लर्निंग वो मुझे बताएगा कि ये मोबाइल है, राइट। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसमें आप किसी भी अपने एल्गोरिथम को, अपने मशीन को, अपनी मॉडल को बताते हैं कि जो हमारा डाटा है उस डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ आप ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन के साथ आप लेबल्स लगा देते हैं। बेस्ड ऑन दैट लेवल हमारा सिस्टम ट्रेन होता है एंड देन उस ट्रेनिंग के बाद जब हम उससे क्यूरी की जाती है, कोई एक न्यू उसको इमेज दे के या उसको न्यू क्यूरी करके, देन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो हमें बता देता है। जस्ट लाइक जिस तरह आपको यहाँ पर नजर आ रही है, हम उसको एक न्यू डॉग एज एन इनपुट दे रहे हैं तो वो हमें डॉग डिटेक्ट कर रहा है। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि रियल लाइफ में अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कैसे होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही हम अगेन एक फादर एंड चाइल्ड की एग्जांपल लेते हैं कि फादर अपने बेटे को लेकर जाता है इस चिड़ियाघर में। ठीक है, अब चिड़ियाघर में देखिए हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, इवन के डिफरेंट प्लेसेस पे, बट अब इन दैट केस जो फादर है वो ये चाहता है कि मेरा बेटा खुद से लर्निंग करे, मैं इसको डायरेक्ट ना करूं, हर मरतबा मुझे इसको डायरेक्शन ना देनी पड़ के ये सेल्फ लर्निंग करे। तो सिर्फ सेल्फ लर्निंग में क्या होता है कि सबसे पहले अगर वो एक पेज के अंदर वहां पर कुछ बर्ड थे, उसने जस्ट बर्ड की तरफ इशारा किया और मुंह से बताया नहीं कुछ, ये कौन सा बर्ड है, या ये एक सेपरेट बर्ड है और दूसरा एक सेपरेट क्लास ऑफ जो है ना वो एनिमल है। देन वो अगेन जाते हैं एक और केज के अंदर जिसके अंदर हमारे पास एलिफेंट्स हैं, वो उसको दिखाते हैं। देन थर्ड में हमारे पास एक लाइन आ जाते हैं, सेकंड केज में हमारे पास मंकीज आ जाते हैं। जस्ट इन दैट केस क्या होता है कि जो फादर है वो बच्चे को जस्ट उस जू का चक्कर लगवा रहा है, मुंह से बता नहीं रहा कि ये कौन कौन सा एनिमल है या कौन सा जानवर, ये एक डिफरेंट क्लास ऑफ जो नो एनिमल है। बट जब आप 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जब आप एक बच्चे को चक्कर लगा देते हैं, देन इन दैट केस बच्चे के ध्यान में एक पिक्चर बननी चली जाती है। ये जो एलिफेंट है, ये जो एक एलिफेंट है, ये बेसिकली विद 4 लेग्स है, एक बड़ा सा इसके आगे सूंड होते हैं, बट एज कम्पेयर टू दैट अगर हम लाइन को देखें उसकी 4 लेग्स तो है बट उसका आगे सूंड नहीं है। इन दैट केस वो दोनों में डिफरेंस करते हैं। सेम लाइक दैट अगर हम उनको बर्ड्स दिखाते हैं, वो बर्ड का शेप, इनकी साइज, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल। तो इन दैट केस उस बच्चे के ज़हन में एक पिक्चर बनती चली जाती है एंड बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग वो जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज के बारे में प्रिडिक्शन देता है। तो सेम लाइक दैट हमारे पास कुछ ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी हैं, हम वहां पर रॉ डाटा जस्ट इंसर्ट करते हैं, हम उनके साथ लेबल्स नहीं लगाते, एंड बेस्ड ऑन द शेप, बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट डाटा वो जो हमारा सिस्टम है उनके दरमियान डिफरेंशिएशन करते हैं। एंड देन हम जब उसको कहते हैं कि आप इसके अंदर से क्लासिफिकेशन करें, तो जिस तरह सिंपली यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमने मॉडल्स को एक साथ फ्रूट्स की पिक्चर दे दी, देन बेस्ड ऑन देयर शेप, बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर उसने उनको सिंप्लीफाई कर लिया, सेपरेट कर लिया। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसमें आप उसको डेटा लेवल की फॉर्म में इंसर्ट नहीं कर रहे होते। क्लियर? एंड देन here is another example of unsupervised machine learning. एंड ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपने सॉरी
इस वीडियो को देखना है, वन टाइम मैं प्ले करूंगा, देन अगेन सेकंड टाइम प्ले करूंगा। आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि इस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है, देन बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग हम अगला कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। ये अब इस वीडियो को देखें जरा गौर से, यहाँ पर क्या हो रहा है। सर ये इसकी लर्निंग हो रही है। यस, अगेन प्ले करूं या अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है इसकी? अगेन प्ले करूं? अच्छा, कोई बता सकता है कि इस वीडियो के अंदर क्या चल रहा था बेसिकली? हाँ, सिंपली बोलिए जिसको गाना दिया जा रहा है, ठीक है। परफेक्ट 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 मींस अगर आप स्टार्ट में देखें, इसको स्टार्ट में देखें कि हमारे पास जैसे ही इसको पिंक कार्ड दिया जाता है, एंड पिंक कार्ड में जैसे ही वो अपनी चोट के साथ ब्रश करती है, देन उसको खाने के लिए दाना मिल जाता है। बट इन दैट केस वो अगेन अंडरस्टैंड करती है अगर किसी और जगह पर वो अपनी चोट स्ट्रेच करेगी, उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। जब तक वो पिंक कार्ड को अपने रेलिवेंट पोजीशन को टच नहीं करती, उसको रिवार्ड नहीं मिलता। अगर वो जो है ना रॉन्ग प्रिडिक्शन करती है या रॉन्ग एक्ट परफॉर्म करती है, इस तरीके से उसको पनिशमेंट मिलती है। जो हमारे अमूमन घरों में जो प्रोसेस चल रहा होता है फादर एंड चाइल्ड के दरमियान, अच्छा काम किया उसको चॉकलेट मिल जाएगी, उसको जो है ना हम स्कूटी लेके दे देंगे, उसको बाहर शॉपिंग पे लेके जाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे। अगर गलत काम किया तो फिर डंडा होगा। आजकल नहीं है, बट कुछ अर्सा पहले तक होता था। बट कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो होती है कि नहीं मिलना, आजकल ना मिलना भी इज अ बिग पनिशमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बेसिकली हम देख रहे हैं कि जब आप एक अच्छा एक्ट परफॉर्म करते हैं आपको रिवार्ड मिलता है, आप एक्ट परफॉर्म नहीं करते आपको पनिशमेंट मिलती है। दिस इज द रिवार्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग, राइट। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कि आप एक अपने सिस्टम को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि आपने ये काम लाजमी करना है, राइट। लाइक मैं कह देता हूँ, मेरे पास एक ये दो एलिमेंट में, ठीक है, मैंने इस सिस्टम को दिए तो आपने इनके ऊपर लर्निंग करनी है। लर्निंग के बाद आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करना है कि दिस इज अ मार्कर एंड दिस इज अ डस्टर, राइट। तो बट जब वो सिस्टम है वो रॉन्ग फीचर सिलेक्ट करेगा, बेस्ड ऑन दैट रॉन्ग फीचर सिस्टम अगेन उसको वापस फीडबैक इंफॉर्मेशन देगा कि आपने रॉन्ग फीचर सिलेक्शन किया, दिस इज द बैकग्राउंड फीचर नॉट अ डस्टर और मार्कर फीचर। तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं कि उस बेस पे हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं कि आपको वापस अगेन ट्रेनिंग करें। बट जैसे ही वो राइट फीचर सिलेक्ट करेगा तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी उसके पास ये एज अ क्या कहते हैं कि बेस इंफॉर्मेशन तो मौजूद होगी हमारे पास सिस्टम में। वो कहेगा ठीक है यू आर हैव सिलेक्टिंग अ राइट फीचर, तो इट मींस वो उससे रेलेवेंट फीचर मजीद एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि राइट नाउ मैं एक सही फीचर सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्लियर? दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो here is a formal definition of reinforcement learning। जस्ट आपको कंसेप्ट देना था, फॉर्मल डेफिनेशन आप अपने एकेडमिक कैरियर में बहुत याद करेंगे। एंड दीज आर द सम की मशीन लर्निंग स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम्स, जो आप कह सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, क्लस्टरिंग है, ये सारे के सारे इंशाल्लाह हम अपने हैंड्स ऑन सेशन के अंदर इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। And these are the some libraries which we will use for different purposes during our hands-on session. The first one is TensorFlow, second one is Keras, and the third one is Pandas scikit-learn। जो जितनी भी हमारी scientific calculation है basically उनके अंदर ये जो main libraries हैं वो ये use होती हैं। And then at the end इंशाल्लाह आपको throughout 3 days आपने hands-on session ही करने होंगे, राइट। और बेसिकली इंशाल्लाह हम लास्ट डे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो आप अपने ज़हन में रख लें कि आज तक जितनी भी आपने मॉडल रन किए हैं उनका डाटा आपको जस्ट एक आउटपुट की फॉर्म में, एक टेक्सचुअल फॉर्म में आता था। बट अब इंशाल्लाह एट द लास्ट डे ऑफ दिस सेशन हम इसी ही मॉडल को डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। कि एक मॉडल है तो वो जो टेक्निकल पर्सन के लिए तो वो है, ठीक है, वो आउटपुट में देख लेते हैं, ठीक है, ये इसकी आंसर आ रही है, इसकी एक्यूरेसी है, ये सिंथेसिस है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आंसर आ रहे हैं। बट
अब एक लेमैन के लिए हम उस मॉडल की आउटपुट को हम कैसे दे सकते हैं, तो फॉर दिस पर्पज इंशाल्लाह हम अपने जितना भी मॉडल होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक डैशबोर्ड के अंदर। आप उधर से हो रही है ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के बाद जस्ट आपने फाइल्स को इंपोर्ट करना होगा, आपका डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा, राइट। उसके अंदर आप अपने डैशबोर्ड की अंदर इवन के बहुत सारी जो ड्रैग एंड ड्रॉप से अपने सिस्टम को भी ट्रेन करवा सकेंगे कि वो जस्ट हम एक रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का एक हम सिनेरियो लेंगे जेट इंजन की, कि हमारे पास 20-30 जेट इंजन हैं और उनके अंदर उनकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, वो इतना अर्सा चल चुके हैं। तो अब अगर एक इंजन है वो हमारे पास न्यू इंजन आता है, वो 5 ईयर्स चलेगा, तो उसके बाद उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बनेगी, इस तरह की हम प्रेडिक्शंस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड, राइट। तो ये हमारे एक स्पेसिफिक फीचर आप कह रहे हैं, यूनिक फीचर के वर्कशॉप का, कि हम टेक्सचुअल डाटा और आंसर से हम उसको डैशबोर्ड की तरफ भी इंशाल्लाह एट द एंड लेके जाएंगे। एंड दिस इज माय वो क्या कहते हैं कि आपको तंग करने के लिए बातें थी, और अब इंशाल्लाह इसके बाद सर आएंगे तो आपको थोड़ा सा मजीद बैकग्राउंड बताया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन वगैरह जो तीन चीजें आज हमने पढ़ी है अभी देखी है हमने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज आप भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी जी, आवाज ठीक है आ रही है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, हाँ सर, वो आप अपनी उसमें जो है ना, जब हाँ यस 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 प्लीज। अच्छा ओके सर, फिर इस तरह करके इंट्रोडक्शन फिर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऑनलाइन वालों से, तो जितने भी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन करवा लें, प्लस अपना बैकग्राउंड बता दें कि आपका बैकग्राउंड क्या है और विद प्रोग्रामिंग नॉलेज आपका प्रोग्रामिंग नॉलेज कितना है, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हम जो हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे। अभी यहाँ तक सिर्फ हम बोल रहे हैं, देन इसके बाद आप लोगों के बोलने की बारी आएगी और आप लोगों के काम करने की बारी आएगी। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन जो आप हमें देंगे, अपना बैकग्राउंड नॉलेज, उसके मुताबिक आप अपने सेशंस को अल्टर करेंगे, राइट। तो माइक सबके लिए ओपन है, प्लीज आप बोल सकते हैं। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. My name is Asad Diaz. I am doing PhD in mechanical engineering from University of Genova, Italy, and my coding expertise are of intermediate level. And sir, I have a small suggestion. अगर तो सर ये मशीन लर्निंग के कोर्स के साथ अगर तो डैशबोर्ड के साथ साथ आप ये भी हमें अगर थोड़ा सा गाइड कर दें इस कोर्स के अंदर के, अगर तो एक मशीन लर्निंग मॉडल अगर हम ट्रेन कर लेते हैं तो उसको सेव कैसे करते हैं, इसकी वेब एपीआई कैसे जनरेट करते हैं, और इसमें जो कंटेनराइजेशन करते हैं, अगर थोड़ा सा इस साइड को भी आप टच कर लें तो ये सर मेरी एक सजेशन है। थैंक यू। परफेक्ट रियाज, वेलकम असद रियाज। बट आप जो सजेशन दे रहे हैं वो बेसिकली अगर आप कंट्रोलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वो इटसेल्फ जो है हमारे पास एक सेपरेट कोर्स पूरा बन जाता है कि हम कंट्रोलाइजेशन कैसे करते हैं, डॉकर्स के ऊपर हम कैसे इन सब चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं। बट इंशाल्लाह हम जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, हम इसके अंदर हर एक चीज़ को हम लेके आगे चलेंगे। जो चीज़ें हम बेसिक्स हम ट्राई करेंगे कि आज हम बेसिक्स, और आज ये 2-3 डेज हम इसके अंदर बेसिक्स अपनी कवर कर लें, एंड देन अगर हमें मजीद एडवांस लेवल पे जाना होगा तो इंशाल्लाह हम इसके लिए कोई सेपरेट सेशन या कोई हम सेपरेट वर्कशॉप या कोर्स हम भी रख सकते हैं। जी नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। असद रियाज, बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ, मैं जनरली बता देता हूँ सबको। आई एम डॉक्टर जाकिर खान फ्राम एयर यूनिवर्सिटी। असद, आपके क्वेश्चन का आंसर ये भी है कि हम जो फाइनल डे में जो एप्लीकेशन बना करके आपको देंगे, जो डैशबोर्ड बनाएंगे, उसके अंदर मॉडल को डिप्लॉय करना, एप्लीकेशन लेवल पे लेके जाना और उसको एक वेब एप्लीकेशन में यूज़ करना, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें मोस्टली चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। लेकिन जनरली बात वही है जिस तरह डॉक्टर शहजाद साहब ने बताया कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट फ्रॉम स्क्रैच हम नहीं सिखा सकते क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होगा, लेकिन जनरली इंशाल्लाह हम मोस्टली चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। चैट पे भी सब लोग आंसर कर सकते हैं, अगर कोई वॉइस में बोलना ना चाहे तो प्लीज। सेकंड वन अपना इंट्रोडक्शन करवा लें। जो ऑनलाइन है
आप पहले इंट्रोडक्शन करवा लें, देन जो हमारे पास फिजिकल है की तरफ बाद में जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास अभी चले सबका नाम लेना पड़ेगा। जोहा गुल प्लीज आप। ओके। Assalamu alaikum, sir. I am Zoha Gul, doing software engineering from Punjab University. I have a background in programming with experience in Python, Java, Flutter, Dart, and the web development, and a little bit ML databases. So yeah, this is from my side. अब्दुल वासे। Assalamu alaikum, sir. I am Abdul Wase. I am doing a bachelor's in AI from SEEK's Nest. I have experience in Python programming, Java, C++, and with databases. That's all. Okay, perfect. Muntaha Bajwa. Assalamu alaikum. I am Muntaha Bajwa. I graduated from the Institute of Space Technology and Computer Science. Currently, I'm looking forward to doing my master's in AI. Okay. नौशरवान, आपका तो इंट्रोडक्शन आ गया था चैट में, और राना नवीद प्लीज आप। ठीक है नौशरवान, आप ही बता दें। Yes, sir. I'm currently pursuing my MS in computer engineering from GIK University, and recently I have completed my first semester. And major subjects were computer architecture, generative AI, and advanced algorithms and computational techniques. And so these are also my interest areas. And from 1st of next month, I will start my second semester. Okay. Sidra Khalil. Sidra Khalil. Okay. Washma Sajjad. Okay. इनका चैट में आंसर आ गया। BS Bioinformatics. Okay, science, perfect. तो कोई और रह गया जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स ने इंट्रोडक्शन ना दिया? मूव करते हैं टुवर्ड्स। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Good morning, sir. My name is Sidra Khalil. I have done MPhil chemistry from the Islamia University of Bahawalpur. I am learning first time programming sessions through your program. Already ongoing through online sessions like Python. And I have learned programming to pursue my PhD studies for research work. Okay. सर, अब जो फिजिकल है हमारे पास वो 1 by 1। Thank you. Assalamu alaikum. My name is Nuzhat Nas, and I'm final year student of BS Computer Science, specialization in AI. No, I'm from Nowshera, Kent, and I study in University of Engineering and Technology, Mardan. Assalamu alaikum. My name is Aruj Khan. I have recently completed my master's in computer science from University of Haripur, and my research area was lie in NLP and AI, and I'm so much interested in generative AI, machine learning, and it was something related to and something different from my research area. Like it is related to bioinformatics and climate change, and that is the hot topic of today. So that's why I joined this boot camp. Thank you very much. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I am Dr. Hayat from School of Natural Science, NUST. I recently joined School NUST, and my research area is deep learning, artificial intelligence, and machine learning. Recently, I'm working on SEO, search engine optimization, bioinformatics field like drugs targeting, metabolic pathway, and other related field in bioinformatics. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Anila Zahra. I am doing my PhD in bioinformatics from Science Nest. Dr. Zamir Hussain. वो बेसिकली स्टेटिस्टियंस हैं
और मैं उनके साथ जो मेरा रिसर्च एरिया है बेसिकली वो है आर्टिफिशियल, जी मेरा जो बेसिकली रिसर्च एरिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, और मेरी जो रिसर्च डोमेन है वो है स्क्रीनिंग ऑफ मेंटल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman Qureshi and I am pursuing my master's degree from GIK Institute. I'm from Tarbela Ghazi and my research area is machine learning AI, artificial intelligence. Assalamu alaikum. My name is Bibar Khan. I'm from Nast Balochistan campus and I'm a lecturer over there in civil engineering department. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hamad. I am pursuing computer engineering second semester student to UED TechScholar-AI. I am interested in ML algorithms and have tested among all of them. And via LangChain and agentic AI, so generative AI is my काफी interest है. Assalamu alaikum. I am Haris Zaid. I recently completed Bachelor in Electrical Engineering from Beria University. I am interested in learning machine learning and its applications. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाखिर हसन है और मैं 7th सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का, और मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है सॉफ्टवेयर ऐसी, तो मेरा जो कोर इंटरेस्ट है वो एमएल और एआई की तरफ है। डॉक्टर रियाज। मेरा नाम लाइबा खालिद है एंड मैं अभी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से हूँ एंड 7th ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, और मेरा जो फाइनल ईयर है एंड जो हमारा मेरा बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एआई एंड मशीन लर्निंग नो एससी, हम तीनों से यस द डिपार्टमेंट इज सीएस। And within that, we have, I think, 5 programs, right? We are running right now. Because it started with AI, data science, yes, IT. Hello everyone, my name is Alisha Hassan. I am from Islamabad and currently I am pursuing Bachelor's of Science in Software Engineering from Comstats University. Yes, and I have just completed my 6th semester and moved towards 7th semester. आगे 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 Assalamu alaikum. My name is Hassan Raza and I have recently completed my college from APS Fort Road. My goal is to do software engineering from NUST, and my goal is to do masters in AI and do bachelors in software engineering. जी ये मेरिट लिस्ट है ये भी होना है फोर्थ में Assalamu alaikum. My name is Hajar Suhail and I have recently graduated from Bhaja College.
Now I have secured admission in CS in NUST 6. Yes, sir. जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ईमान हुसैन है I did my bachelor's in finance from Turkey. I recently completed Bilkent University. I recently finished my master's in Australia in financial technology. मेरा focus जो था वो cryptocurrencies, blockchain और fintech था. In the last semester I did a project. I created a neural network in our programming language. और मेरे कुछ projects हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ खुद. और मैं भी वेकेशन पे आया हुआ था पाकिस्तान तो मुझे जी आर एक्सप्लोर करने के बाद आई रियलाइज्ड बट पाइथन इज वेरी वर्सेटाइल जो लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर हैं मैंने स्विनबर्न से अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अमजद नवाज़ है और मैंने एमफिल किया है एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से और लास्ट 5 ईयर्स से मैं एज स्टैटिस्टिशियन काम कर रहा था पहले शिफा इंटरनेशनल में और फिर फज़ैया मेडिकल कॉलेज एयर यूनिवर्सिटी में और अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया एज सीनियर पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में और मेरा जो रिसर्च एरिया है वो लिपिड प्रोफाइल की मॉडलिंग है डिस्लिपिडीमिया और फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया और डायबिटीज़ एनसीडीज़ के ऊपर मैंने काम किया है और पेपर्स के ऊपर भी काम किया है और शिफा में डॉक्टर फौजिया सादिक हैं इंपीरियल से उनके साथ कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी भी मैं काम कर रहा हूँ जिसमें हेल्थ इकोनॉमिक्स है और एफएच के ऊपर थैंक यू In bioinformatics, data science, art, Python, TED, and NGS. He is a strong research professional with a doctor of philosophy from the University of Illinois at Urbana-Champaign. Okay, so See? Okay, so where to start? Because Shahzad gave us good introduction overview of AI and ML. But I still can go different route and a different school. So, and I hope it will be more interactive because I like two-way traffic interactions, so sit with them. Hands-on sessions, so you have to practice and interrupt whenever you are not understanding because you are coming from a longer distance, like in Shara or Pakistan. Even on the back, why don't you come on the front row so it can be that more close to each other. So my other background is this is from the same other American culture, they say just pharma and then PhD. You go with your names. Similar in Australia, I think Turkey also. Our culture is more like colonialism, still colonialism.
or like military, but like sir, boss, doctor, or their advisor. It's not supervisor. So advisor is the one who advises you for your doctoral or master's thesis. That's especially called. So advisor sits on the back seat. So you are driving the car, and they can give you the advice whenever and wherever the thing is. Right? In our culture, there is supervisors, boss, enough. Yes. So we had. Then you use my very slow. So can you give me a? Yeah, I can put it in my collar. Excuse me, sir. We are unable to hear you. Oh. So I think I need to then keep checking this thing. So now you hear me, right? So I just started. I was just telling them about my nomenclature of my name, and I've been associated with different institutes, and that's a long story short. Like since we started these trainings for something good, for some causes, but and then obviously God helps you when you try to help God's people, right? And then I got connected with so many finance people, even like Shahzad. He was a virtual university student, virtual University of Pakistan. So one of the faculty member came to our first trainings. I think Dr. The bioinformatics head. Now Tariq, no Tanveer. So he came to our training, and then I was straight from Illinois at that time with a more American accent. Now my accent is again mixed. Oh, by the way, I did not develop that accent. It's my humble background. I'll show you in a moment. So I've been associated with multiple institutes. I'll just tell you in a moment. Comstack and ISGV. ISGV is in Italy, Trieste. So we had a couple of trainings with them. Once at Comstack's University. So their professors, they came here. And then we had one training which I was supposed to go there, but then I had to do it online because of the visa problems, because Italy is really hard to give you the visa appointment, even tougher than USA. So anyways, so we work with them. Comstack is an organization that is under OIC. I'll show you in a moment. So this is where my studies actually started. Do you have the pointer clicker? Laser hai Shazad? So if you look here, that was my first tablet which I used. So that tablet was not like the electronic tablet. It was made up of wood. Use कर सकते हैं तो फिर इसमें बोलना भी होगा. Okay, so that's where I am. So I think I can move. I can leave the podium. No issues, right? I cannot stick to this thing. So I keep moving and keep checking on the people what they are doing, especially the people on the back. Why don't you come on front? You have the space here. आ जाओ शाबाश. आप कौन है और कहाँ से ये बच्चे अभी आए हैं? Thank you so much. CME, it's nearby, right? And आपका बेटा आप सेम है? From C. अरे कुछ दोस्त यहाँ है, कुछ यहाँ है. Right. So that was the first tablet which we used to write. That was made up of wood. We used to make the ink. Made a takhti likhte the exactly, and then एक और होती थी slate बोलते थे उसको. So slate and takhti. So those are the tablets which we use. And alhamdulillah, a long journey. And then in my PhD, I was ended up
So that's where we started and that's where we ended. Shahzad might have the similar thing. I think he got connected with virtual university from quite a far off place. Virtual university, as the lectures are online. There was a television channels at that time, so we used to air our lectures, 2 lectures a week, just like your regular lectures. So these folks, they used to be at Haripur, or I think you were at Haripur, right? Yes. And then the teachers were not supposed to meet the students in person, but somehow he traced me. I think I went there in one of their conference or seminar. So I gave a talk. So after that he came and he was smart to have my number. And then I think somebody took me away immediately. But till then we got connected. So afterwards he was, I think he got motivated through that course, right? So that's how it happens. So you decide you want to do something different with your life, and you go with some passion and career, and you keep on changing your paths, right? And that's absolutely okay. In Pakistan, these are the taboos, like pre-medical, medical college, or otherwise you are dead. Similar happened to us, right? Engineering people, I think engineering universities, otherwise you are dead. But now the things are changing. So you realize at any phase of your life that, oh, I think I was good in engineering. I should have done civil engineering because I should have done it better, right? So that's how those people are doing there. And thanks to this technology, information technology at that time when we were young career beginners, now in your lives or in your times, the time frame has been changed. Now the buzzword is artificial intelligence, machine learning, right? That's why you guys are here. So, and then anything that strikes to your heart, you feel like you are good with that thing, just go for it. Don't worry, okay? How I changed from a biologist to these stuff, IT and similar stuff, because in that university where I joined, this is just a village life. You can recognize some of the things, maybe in pictures or movies or old pictures, or if you visit your grandma or grandpa house back there in your villages, you might have seen some of these things, right? This is not for you because I gave similar training at 2 countries, Mali and Mauritania. So in Africans and Arab Africans, so they were exploring that we had not many things common. They have the things which were similar in their countries and cultures as well. So Excuse me, sir. Your voice is not coming. too much technology sometimes is scary, right? So you have to stick to the podium. आपको इधर इसके साथ कोई एक रस्सी लगानी चाहिए. Anyway, so I was just telling them that this picture at the top is called hooding. So when you do your PhD, to sit in, why I'm doing that, to motivate some of you or more of you to go there, or at least spend 1 year or couple of years for your PhD research work. Okay, those people are really good people of God. They have advanced technologies, right? And they are doing these state-of-the-art things.
Some of our universities like NAST and little bit in ComStats, we are managing those things, but still there is a hell of difference. Okay. So anyways, that's a tradition. So when you do your PhD, आपके पास scholar mic है? Okay. So when you do, इसको मैं देते हैं और इसको इधर use कर लेते हैं. Excellent, excellent. I love you. You're a wonderful person. Oh, that's my come to that point. So we were here. So that's a tradition. They say it came from your culture, Islam. So in Baghdad universities, and then people used to have the degrees. They used to put turban, पगड़ सी बांधते हैं जैसे हमारे मदारिस में होता है वो अक्सर वाल चाकिंग आपने देखा होगा लगा होता है हाईवेज के ऊपर जलसा दस्तार बंदी or something like दस्तार फजीलत, right? So it's actually that thing which they preserved. Okay, so you must be proud of it. And then ये जो आपका hooding है माशाल्लाह आपने वो भी किया हुआ है, very nice. You हाफिज? Mashallah, mashallah. And he's a gem, he's a genius. He thinks in multiple dimensions. इसका जो दिमाग है ना, ये आप इसके उस सादे से स्टाइल पे मत जाइए. कहने का मकसद ये है कि you pass on to different stages of your life, okay? And then some people they transform, and some people they keep the things as it is. So anyway, so what you have over here is just a humble bag. I give full credit to this my village school teacher Master Riyaz साहब जिन्होंने अले बे क्या था ते से वो वहां से और 1 + 2 + 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 and Professor Bushra Mirza gave us really good concepts of molecular biology which are still intact. So anything we talk about the DNA and the RNA and the protein still stays there after spending 25 to 30 years in IT. So this is just to tell you, and Professor Donald Bullock, a stats professor. So while I was there, I have to take 2 courses of statistics. So applied statistical 1 and applied statistical methods 2. Over there, we were using another tool, SAS. And then later on, I also did some SPSS, but mostly I did my things in R. But he was excellent in giving me good concepts of statistics. So I assisted him as a teaching assistant, TA. बड़े के साथ छोटा लग गया. अब now, like Sadia is assisting me, or somebody else is assisting your professors. So that's a great opportunity to learn from them. Okay, even if it's free. Over there, it was not free. They were paying me. They were that was giving us the tuition waivers. Degree is very expensive. First 2 years, ComStats supported us. Thanks to them. All credits to them. Some of the jobs which I took. So after my master's degree, I went to PF Inter College Chiklala Kidare, and I was given a class to teach which level you expect. कौन सा लेवल मिला होगा मुझे पढ़ाने को. अब आप बच्चे बच्चियां यहाँ बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं तो दे थिंक लाइक दे शुड बी हायर्ड हियर एज पॉसिबल. यूनिवर्सिटी से निकल के यूनिवर्सिटी में ही लग जाएं, राइट? बट आपको हो सकता है कि किंडरगार्टनर्स मिल जाएं, पहली के बच्चे, दूसरी के. आई गॉट 6th graders to teach, right? But I loved them and they loved me. So you love your job. What God is offering, just take it and follow his footsteps. And then you reach to your whatever you hope and try and struggle for the best. Okay? But बच्चे बच्चियां छोटे बेटियां बेटे जो बैठे हुए हैं आपने डिस्करेज नहीं होना इस चीज से, ठीक है? कि मैं कोई am I a babysitter? 6th grader? हालत है कोई? MSc किया हुआ मैंने, MPhil किया हुआ है? No, just take it, okay? And go slow and steady. हमारा एक पाकिस्तानियों का शायद आपने बाहर ऑब्जर्व किया होगा, मिडल ईस्ट में या इन कंट्रीज में एक कंप्लेंट आता है कि इनको ये होता है कि शुरू में ही मतलब रेड कारपेट चाहिए या व्हाइट. Whereas the competitor Indians, Sri Lankans, Bengalis, they compromise on low salaries. So right from the beginning, whatever is given to you, just take it, work hard, and then you make your space. Okay, ये भी एक moral of the story. Then cadet colleges who really reshaped and reformed my personality. थोड़ा सा अगर आपको फौजी स्टाइल लग रहा है हल्का फुल्का, just because of cadet college Palandari, Azad Kashmir, and Hassan Abdal, and finally to ComStat. तो ये मैं आपको बताने का मकसद ये है कि we are products of our circumstances. फुटबॉल गेम देखा होगा आपने या फुटबॉल खेली होगी, इधर से किक लगी उधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर, finally here you end up, right? You plan to be like in Pakistan, we realized that we should have stick in our hands.
right? We should be in some administrative positions, right? So we tried everything, I tell you. So many attempts and so many tries. Now my kids, they are impatient. They want to do just, Baba, ये क्या salary हुई? What you are getting? अभी तो वो इतने से तो start होता है. Where I'm ending actually. But every parent Excuse me, sir. Sorry for disturbing you again, but your voice is not coming. सादिया अपना सर वो म्यूट हो गए थे जस्ट रिस्पॉन्ड नहीं हमने सारा सामान रखा हुआ है वो अपनी किट नहीं लेके आए क्योंकि हम थ्योरी लगाते हैं आपका यूनिवर्सिटी तो माशाल्लाह बहुत डेवलप्ड है बट समटाइम्स वी गो देयर एंड वी डोंट हैव lot many facilities so we have arrangements for everything so ComSats is Commission on Science and Technology for Sustainable Development of the South. Why South? Why not North? Right? So here is the reason. If you look into the northern hemisphere, mostly these are rich nations. But the member states that are in ComStats Commission, they're mostly coming from the southern hemisphere. So you must be wondering कि पाकिस्तान किधर आता है? पाकिस्तान तो इक्वेटर से ऊपर है. But somehow, most of the countries, जो कि इसमें है, majority developing countries are in south. So professor had a vision that we should have a commission that should work on sustainable development. What is sustainable development? आजकल एक चर्चा हो रहा है sustainable development goals. ये जरा just go through them. Understand them. So whenever you are applying for funding, the young researchers, if they are here, or if your professor asks you to write for funding, you have to think about which goal you are addressing, Sustainable Development Goals, SDGs, by UNESCO, right? And I think UN, they came up with them. There are how many? I think initially there were 15 of them, but now I think around 20 maybe, right? Number one, poverty alleviation. Number two, the environment. Number three, good environment. Number four, good agriculture, and so on. So these are different goals which they set up. So the things which you contribute, they sustain and they stay longer. What they contributed when this 21st century started, we realized that information technology is coming, is emerging. How old are you? Most of you born after your क्या generation यार वो आजकल जो चलता है Gen Z, born after year 2000. What are you? Before 2000 क्या हुआ? और हम वो 70-75 वाले वो जो कोरोला होती थी उस जमाने की गाड़ियां 75 मॉडल कुछ बुजुर्गों ने अभी भी रखी हुई हमारे लिव एट अस्करी 14 तो हमारे जो उस जमाने में मेजॉरिटी जो मेरे नेबर्स हैं बाबे कर्नैल वगैरह जो रिटायर्ड हैं किसी ने कोई वो रखी हुई है उस जमाने की एंटीक्स ऑब्वियसली दैट मे बी देयर फर्स्ट कार्स राइट तो योर डैड पिक्ड अप योर मॉम और आफ्टर द मैरिज राइट हमारे दौर में ये चीजें नहीं थी so obviously that car is really important for him or her ना तो वो 75 मॉडल 70 मॉडल then Corolla 80s and 90s उसका बड़ा एक पैका होता था right nowadays the kids think that क्या आजकल क्या गाड़ियां चल रही हैं जी वो अजीब अजीब बेढंगे किस्म के मॉडल्स आ गए एक तो वो बड़े वाले हैं जी व्हाट इज योर फेवरेट कार ड्रीम गर्ल in our times it was Volkswagen right I have still the models in my table right so my kids are baba आप बस वो अपना और Vespa साइकिल होता था उस जमाने में anyway so when 21st century started a gem Professor Ataur Rahman you guys know him
नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अभी किसी टिकटॉकर का पूछो, किसी और आर्टिस्ट का पूछो, फौरन बता देंगे, है ना। बड़े बेईमान हो। These should be your ideals. Go through and study their lives, okay? Because you are following their footsteps. You are not becoming TikToker, or you're not becoming Allah maaf kare kya hote hain jo, right? Easy money and then you know how do they end up, right? The life is miserable. वो बच्चे वो बच्चियां जो उस डगर पे चलते हैं, पैसा बहुत आता है, बट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क। आप तो माशाल्लाह पढ़ने लिखने वाले ना सारे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, तो अपने फील्ड के, अपने डोमेन के जो बुजुर्ग हैं, जरा उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ें, सोचें, राइट? मैनी लेडीज are there in our field. Who coined the term bioinformatics, or who is given the credit as a founder of bioinformatics? It's a lady. Barbara, Barbara was for these jumping genes, Nobel Prize, Margaret Dehau. So Margaret should be given credit for this whole field. So I was there. So when this 21st century started, we realized that IT, information technology, is coming. You guys remember President Musharraf? जानते हैं उनके बारे में या उनको देखा हो कभी? तो वो जो शुरू में तकरीरें करते थे उसमें he used to say information technology is very important, so we have to go for it, and he was very right. Thanks to him, thanks to Professor Atta, he was appointed as Minister of Science and Technology, and then they developed our institute, ComSat's Institute of Information Technology, that later on transformed into ComSat's University Islamabad. Similarly, at NUST, SEEKS, somebody mentioned, School of Electrical and Computer Engineering. I think it was its original name was different. I took admission after my second degree in Masters in Computer Sciences from Barani Institute of IT. So again, BIIT, Jamil Swar साहब ने हमें ये उस ज़माने में पढ़ाई थी. But anyways, so those folks, they recognize that this thing is coming and it is very important. So we should have departments or dedicated institutes for information technology. So ComSat started as an internet service provider, ISP. हमारे करके 100 रुपए का कार्ड होता था, आई थिंक 1 आवर वो बड़ी जल्दी गुजर जाता था और नेट स्पीड भी कोई नहीं होती थी, बट दिस हाउ वी स्टार्टेड एक्चुअली. सो वी saw different phases. Now we are 7 physical and 1 virtual, total 8 campuses, right? But originally our dimension was to do everything with an IT component, with an IT touch, right? वो touch का एक पिछले दिनों एक buzzword भी आया था ना, Islamic touch, Fulani touch. So IT touch. So everything that should be directed are aligned with the information technology. So our department, established by one of our elder Buzurg, Professor Shazad Mufti, right? Why I'm mentioning ये बाबे क्यों दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को? Because आपने IT के, AI के जितने भी जो बाबे हैं उनके बारे में देखा करो, पढ़ा करो. कल आप में से कोई उस लेवल पे जाएगा, इंशाल्लाह जरूर जाएगा. Because potential बहुत है, वाकई ये मिट्टी बहुत जरखेज है. आपको डायमेंशन देना है, आपको फैसिलिटेट करना है, एंड गॉड नोज इट बेटर. आप फैसिलिटेट नहीं हो रहे, मे बी गॉड पिक्स यू अप, टेक्स यू टू ऑस्ट्रेलिया, टेक्स यू टू यूएसए, टेक्स यू टू समवेयर एल्स, एंड यू डू वंडर्स ओवर देयर. स्टिल यू आर आवर एसेट. वेयरएवर यू गो, जस्ट गो, डू योर वर्क, राइट? And your religion and your everything, bread and butter is humanity, God's people, right? This whole world is all yours. So scientists, they are all connected. See, बहुत सारी चीजें हैं we got from them. We did not develop these things, but we are using them. So that's our team in bioinformatics. Their contacts are there. So I go to the topic because now I need to get back. So here we start, right? So everyone knows we have a book of life, right? Book of life, right? What is the language in which this book is written? It's DNA. Ever heard of it? People from engineering, people from computer sciences, and in high school biology, you must have seen that picture that everything is made up of cells. So cell is the basic structural and functional unit of life, right? And that contains what we called, or what we knew in our high school biology to clear that paper, that there are some darn things called as chromosomes. Chromosomes are nothing but bundles or packets in which this thing, this DNA, that genetic material, that program of life,
right, is distributed or divided to the future generation, right? Okay, so it stays there dissolved within the cells, but then at the time of cell division, it appears in the shape of these bundles or packets, right? You have a long thread or something which you need to distribute, right? And you have a pile of it, big pile of it. How would you distribute? You make small bundles or packets, right? And then you distribute. Okay, so that's how this thing was visible to somebody, like some colored packets or bundles, and he called it as chromosomes. Chroma means colored, som or soma means bodies. So colored bodies in his language. So that's why this term came out. You zoom into those things till you find there is something like a thread here. That thread is called as the DNA. Later on you zoom in, and then we realize that this is not a single thread. These are two threads which are wrapped around each other, right? In a spiral way. We call it as double helix, helical structure, the thing that curls. Okay, helical. So double helical structure. So people with biology, kahin pada, intermediate mein, high school mein, right? High school over there is FSC, यहाँ पे high school is metric, then higher secondary, right? So आपने FSC तक या ICS वाले बच्चों ने बायोलॉजी पीछे छोड़ दी होगी. अब तो I think 9th में वो separate कर देते हैं. Now we realized we should put biology and maths back together. हम लोग जो जनरेशन है हमने कंप्यूटर साइंस कर लिया, स्टैट्स कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी, लेकिन कहाँ जाके फंस जाते हैं? मैथ्स में. जरा सी इक्वेशन देखी, दिमाग का फ्यूज उधर ही, दिमाग की बत्ती गुल, right? Because we are scared of those equations. By the way, those equations are not that scared. I get a chance to learn about the linear statistical models. बहुत simple और very easy है, लेकिन वैसे equation देख के ना बंदा भाग जाता है. So anyways, you zoom in till you find these are some letter-like things which are written here. It's not exactly like this. These are chemical structures, molecules, but we are not going into chemistry. Here we need to engage the people which are coming from engineering or which are coming from computer sciences or some similar backgrounds. I guess your field is business data science. My son is pursuing a degree. ComStat started, I think it's his first batch, business data analytics. But since he joined ComStats first, then he discouraged his sister to join ComStats, rather join us. So she's coming here. Otherwise, over there, she was almost free for me. By the way, you guys have a lot of fee. बहुत ज़्यादा बढ़ा होने, है ना? But anyways, we do it for our children. That's the most beautiful part in this culture. Your parents do everything for you, right? Just take care of them when they are old, when they need you. Okay, I got back. I got options to stay there. But my younger brother, he was in military some 20 years back as a young captain from EME, just graduated with distinction and then passed away, right? So I had to get back, right? And what I got my compensation is when father was dying with COVID, and in COVID ward of MH, I just holded his hand for almost a week. So that paid me for everything. I can't tell you the feeling which I got. जो मैंने उनका हाथ पकड़ के एक हफ्ता उनके साथ रहा हूँ. Most of the time we used to hold each other's hand, and he used to press my hand, and he was telling me like, okay, you take the jobs. I'm leaving. My job is done. It's like a relay race, right? The life is like a वो relay नहीं होता, वो भाग के आता है, अगले बंदे को पकड़ाता है. Sorry शहजाद, अगर मैं थोड़ा सा longer than वो चला जाऊँ. मजा आ रहा है बच्चों? We can take break and resume that. I will stay up till this Sadia session is it, but I got more fascinated. I want to attend this thing more. So not many things. आपने बोला कि सूरज और चिराग वाली जो मिसाल दी, I think again things are changed. अब जमाना बदल गया है. ये बहुत सारी चीजें हमारी ट्रेनिंग में वो हैं जो कि स्टूडेंट्स ने करके दी हैं और एक्सप्लोर करके दी हैं. When we started bioinformatics, we were doing with FASTA and BLAST and ClusterW, बड़े बेसिक किस्म के वो टूल्स थे. I did my PhD mainly in NGS data analysis, और उसमें भी RNA-seq के ऊपर, जिस पे अभी वो मसूद वर्कशॉप करा रहे हैं, another student in DS, wonderful person. तो उस पे था. But when I got back, I asked the students to do metagenomics, to do everything, and they used to do that.
Sadia nowadays is, I think, moving towards this prompt engineering or some. Last night she was switching the codes from, because Shehzad asked us to use Colab. So we used to use the Anaconda. Anaconda is a place where you don't need to do installations or lot many things. हमने individually भी Jupyter notebook करते हैं, but Anaconda was killing resources. So Shehzad gave us another good alternative. वो पता तो था मेरे को लैब का, लेकिन उतना कभी इस्तेमाल नहीं किया. And I think yesterday around afternoon she started and she spent almost half a night. 2 बजे मेरे ख्याल आप सोई हैं, तो तब तक इन्होंने कोड अपना सारा ट्रांसफॉर्म किया कोलैब के अंदर. And she was so excited in the morning, sir, this is better than Anaconda. बहुत सारी चीजें ये खुद ही ठीक कर देते हैं. तो anyways, this is how these things they go, right? So alhamdulillah. So anyways, so these nucleotides are there, ATGCs, 4 letters. You must be wondering, only 4 letters? How many letters are there in English? How many in Urdu? How many in Quran, Arabic? Right? Roughly around 30, 26 to 30. है ना? मुझे भी भूल गया आप कितने हैं exactly. किसी में 27 है, किसी में I guess 26 हैं, something like that. Oh, by the way, here is another thing that's also related to that. Proteins, amino acids. There are 20. So यहाँ पे 4 letters हैं. Then how can you write a book with 4 letters? Does it depends on letters? No, it depends on words and the word size which you define. Okay, what if I give you an option ke word size is only 1? So how many words you can make with 4 letters? Either it can be A, or it can be T, or it can be G, or it can be C. These 4 letters you have. These are your alphabets. Okay, computing language, alphabets. Binary digits होते हैं computers के अंदर, ones and zeros, bits. Here, quadruple, something that is made up of 4 things, A, T, G, and C. Okay, so bits अगर 2 हैं और उससे आप you can do everything, यहाँ तो उससे डबल रखा है. नेचर ने थोड़ा सा उससे ज्यादा आजादी दी है यहाँ पे. So we have 4 letters here. The word can be anything. 1 letter, 2 letter, 3 letter, 4 letter. This thing goes like 4 raised to power something. 4 raised to power 1, that means word size 1. 4 raised to power 2. अगर 2 इस्तेमाल करूं फिर कितने बनेंगे? A goes with A goes with T, A goes with G, A goes with C. Right? So 4 raised to power 2. 4 into 4. 4 idhar, 16. What if I use 3? Then it becomes 4 raised to power 3. That's 64 and so on. Okay? Computers mein everything is 2 raised to power something. Bit system. Right? 2 raised to power 0. आपका जो पहला bit होता है, that's 1. 2 raised to power 1, that's 2. 2 raised to power 2, that's 4. So this thing goes in powers of 2. Here thing goes in powers of 4, right? And so on. So this way, अच्छा, DNA sequencing की तरफ आते हैं. No, that means knowing that sequence is important. Back there in the chain, we have phosphate groups. We have sugar molecules, ribose in RNA and deoxyribose in DNA. That's why it's called as deoxyribose. Ribose is a sugar like glucose. Glucose is 6 carbons. Ribose have 5 carbons. But we are not interested in that because that is the same sugar molecule everywhere. The same phosphate groups everywhere. Where lies the difference? Where lies the difference? How do you recognize that this is Wasim and this is Shehzad? जिनको आप कह रहे हैं. बाय द वे, स्टैट्स में वेरिएबल्स कह रहे थे, अब मशीन लर्निंग आ गया तो अब हम इनको फीचर्स कह रहे हैं. बात तो वही है, कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो. लैंग्वेजेस दे चेंज अ लिटिल बिट. ओके, इंस्टांसेस अब डेटाबेसेस में भी पढ़ते हैं, राइट? द रो, द रिकॉर्ड्स, इंस्टांसेस. Okay, we'll come to that. So anyways, these ATGCs, their sequence, you want to know about that. So then there came out the DNA sequencing. Again, Salam comes in here. His students, Gilbert, and the grand student, Maxim and Gilbert. The technique got famous as Maxim-Gilbert DNA sequencing method. But since the technique involved chemical digestion or degradation, and it was a little bit hard to understand, a little bit hard to do in the labs.
What thing is the most harder in your life? Anybody with pre-medical majors? What is harder for you? Besides mathematics, now you reduce to biology, chemistry, and physics. So which was the hardest for you? Or what about physics? Yeah, so anything where chemistry is involved, right? You don't like it. I did not like it. Later on, my wife, she got MSc chemistry, right? So I have chemistry in my home. I ran away from chemistry because in master's level, I got a chance at QAU to either go to chemistry or biology. So biology things, they were more good. People were like more smiling, right? Physics, maths, it's tough job, right? So people are like, because their life is tough. So I think somehow people were not able to understand those hardcore things or maybe apply those things. So then came another person here called as Fred Sanger, very distinguished. So, Salam also is a Nobel laureate. By the way, you know Salam? Abdul Salam. इनका Nobel Prize किस चीज पे है? I attended, lucky to attended a talk by one of his students. Lady came from Italy, I think, right? And she showed us some personal work. उनके डायरी के कुछ उन्होंने स्क्रीनशॉट दिए थे. उसमें वो जहां जहां इक्वेशंस लिख रहे हैं वहां पे बड़ी जगह पे उनके ना उर्दू में कमेंट्स बड़े मजे के थे. जैसे एक जगह लिखा हुआ था गलत हो गया और एक जगह सलाम लिख रहे हैं कोई चीज उन्होंने सॉल्व कर ली तो वो अपने आप को कह रहे हैं शाबाश. He's patting on his own back. And you know from where he started? From a very, very humble background. एक कमरे के घर से गालबन फैसलाबाद में मेरे ख्याल उनका मोहल्ला है जहाँ से वो फैमिली उनकी गई थी. और he was a Nobel laureate. उन्होंने theoretical physics में what concept he gave us? खुदा के वास्ते यार, आपका अपना नोबेल लॉरिएट है, मलाला का ही पता है सिर्फ आप लोगों को, राइट? सो उनका कॉन्सेप्ट था यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. तो जो हमारी फोर्सेस हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं कौन कौन सी मेनली, अब मुझे इतना शायद आइडिया, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है. देन यू गॉट द कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक आर द सेम, राइट? ग्रेविटेशनल है. So I think there are 4 of them. Salam combined 2 of them recently. Now they believe all forces are actually they are the same, right? You can think of these things coming from the same origin, from the same center, right? थोड़ा सा उस तरफ भी ले लें इसको, स्पिरिचुअल साइड पे कोई मुजायका नहीं है, हरज नहीं हो. कहते ना साइंटिस्ट ज्यादा गॉड के उस चीज से बाहर निकल जाते हैं. बट आई सी द अदर एक्सट्रीम एज वेल, राइट? ये जो एक कोड रखा हुआ है आपका, जो एक तरतीब रखा हुआ है डीएनए की शक्ल में, क्या यही शायद लोहे महफूज होगा, राइट? जिसका जिक्र है. एंड ऑब्वियसली सिस्टम एक ही तरह से काम कर रहा है, be it a virus or be it human being, the most complicated. Be it that simple living system, everything is with that ATGCs. So you want to know the sequence of these ATGCs, this thing is called as sequencing. So what Salam did, Sanger did was he introduced the concept of, when DNA replicates from one strand, from one thread, it becomes 2. Those 2 threads are actually separate from each other, and then every strand prepares its missing piece. So this thing is called as sequencing by synthesis. So you synthesize a new strand, right? A new chain, while copying what information you have on the other side. Here, they noted that every time if you have on one side A, on the other side it attaches with T. A goes with T, G goes with C. That's it. A goes with T, G goes with C. If you have on one side A, T will come and attach over there. So modern day sequencing techniques are using what Fred Sanger invented, right? So what he did was he made those DNA strands as single stranded and then allow those nucleotides to come and attach. And he put a fluorescently labeled tags there, signals there. So whenever a nucleotide is incorporated, a light signal comes out, right? And A was given a different color, then T, then G, then C. So 4 different colors we are using. So here A is attaching red color, T is attaching red color. That means on the opposite side you have A. So in this way you can get the sequence of these things. So that thing is called as DNA sequencing, right? And nowadays
we went further, right? We came up with next generation sequencing. So this technique was automated with huge machines, with state-of-the-art machines delivered by engineers. And that's how you can sequence any genome. We call together these things, we call it as genome. Your genome, bacteria's genome, anybody's genome, right? Why this thing is important? Why biology or bioinformatics is important, especially nowadays. You got something just a couple of years back. डॉक्टर साहब उसी यूनिवर्सिटी से करके हैं, किधर गए वो वुहान वाले, मैं डरा रहे हैं आप हमें. You know, Wuhan in China, what actually started from there? Yeah, they think that it's from there. So I think the first cases they were reported over there, and they had really tough time at that time. आप इनसे जरा story सुनिएगा during the network session. How much time do we have? 11? Okay, so I just wrap up. So we have these things, so that's generating huge amount of data coming to, we can resume even after the talk, after this refreshment. So refreshment time पे दें क्योंकि they deserve a break. कुछ नाश्ता भी नहीं करके आए होंगे, है ना? स्पेशली लेट होने का खतरा. तो मैं शहजाद को कहा भी कि थोड़ा सा मुझे लेट कर दो, क्योंकि बेगमात जो है ना वो इमरजेंसी लगाई रखती है. उन्होंने एक दिन पहले मुझे बताया कि बेटी की स्कूल में वो है. वी हैव टू यूनिवर्सिटी, वन बेबी, शी इज स्टिल बेबी एंड शी विल स्टे एज बेबी, क्योंकि वो बाकी बड़ों में और उसमें को 8-10 साल का गैप है. तो शी इज इन मिडिल स्कूल राइट नाउ, 6th ग्रेडर. तो उसके स्कूल में मीटिंग थी, पीटीएम. सो आई ड्रॉप्ड हर with a request के वापसी पे आप कुछ कर लें in driver shower, though I have to go and give full explanation, right? So NGS platforms are, they perform massively parallel sequencing during which millions of the fragments from a single word. What happens over here is DNA is a longer entity, a long thread. So you need to break it into small, short fragments, right? So we do with some chemicals and reagents or some other techniques. I'm not going into that. Somebody looked these fragments like a fire of a shotgun. आवाज नहीं आई, साउंड सिस्टम नहीं है आपके पास. साउंड सिस्टम है? साउंड है यहाँ पे? Okay, so if you connect it with that mic, I have some sound effects here to keep them alive and engaging. So somebody looked these fragments like a fire of a shotgun. Shotgun पता है क्या होती है? वो कारतूस होता है उसमें, cartridge. It has splinters in them, and they go and spread and hit the innocent bird. So that's why it's called as shotgun method. These are the instruments in which this thing is happening. बिल्कुल ग्लास स्लाइड होता है, जैसे आपने माइक्रोस्कोप पे अगर बच्चों ने काम किया हो कभी मैट्रिक वगैरह में, या वो प्याज की वो क्या ऑनियन का वो एक वो बनाया करते थे हम, है ना, मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में. नेवर यूज अ माइक्रोस्कोप. यू नो व्हाट देयर इज अ माइक्रोस्कोप? या interesting, our teachers used to call us when we picked up pre-medical, the college teachers used to call us, you have the scope under the microscope, right? ये नहीं आपका स्कोप तो नहीं है. डॉक्टर बन के तो ठीक, वरना यू आर इन ट्रबल, राइट? एक टीचर बहुत डराते थे कि वो आप वो मेडिकल रैप्स होते हैं ना जो बैग लेके डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, वो डॉक्टर दवाई भी नहीं लेता, वो बाहर बैठाई रखता है सारा दिन, वो बनेंगे सारे के सारे. वी वर लाइक वी आर ऑल डेड, राइट? एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग टाइम. देन कंप्यूटर्स कुछ नए नए उस जमाने में आ रहे थे, तो बीएससी इनरोल कर लिया. वो बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था, बड़ा हॉरिबल किस्म का. उसमें यू हैव टू डाइसेक्ट कॉकरोचेस एंड फिशेस. वो एक शार्क की छोटी बहन होती है, उसको स्कॉलियोडॉन बोलते हैं, बिल्कुल मिनी शार्क होता है, उसका पूरा डाइसेक्शन. एंड इट स्मेल्ड सो बैड, वो फार्मलिन के अंदर. बाकी फ्रॉग बग्स तो आपको पता ही है, तो आपने भी मेरे ख्याल डडू शडू पढ़े होंगे. मैट्रिक में होता है, एफएससी में किन किन ने किया ऑनेस्टली बताएं फ्रॉग का डाइसेक्शन? कॉकरोच का अंदाजा करें, कॉकरोच का जनाब माउथ पार्ट्स निकालने, उसके दांत चेक कर रहे हैं हम, निकाल के मुंह खोलो जरा, एंड यू आर पिकिंग अप दैट. सो दो स्लाइड्स, बात वहां से चली थी. सो स्लाइड लाइक थिंग्स, वेरी स्मॉल एंड एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटेड. दैट मींस इट्स जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा टू वर्क on them. So that's a huge amount of research work or jobs which are coming with this thing. So different sequencing technologies, and one of them is Illumina, one of them is Solid. Companies hai. Illumina uses this thing called as flow chip. Solid has, flow chip. Illumina has flow cell. 454 has picotiter plates. And another very interesting thing is OIN semiconductor chip that is done by another technology called as OIN torrent. Okay.
So small chips, you put your DNA, you get your sample, right? And you take just a blood drop, put it there, it will sequence everything. And then you can go on computers and see which gene has an issue. This person can be having this thing in his life. I'm not kidding. People are using that, right? Even the most of those famous Hollywood actresses and actors, they had done their DNA sequencing. Angelina Jolie, somebody told us, and he's a big name in health, Dr. Shazad, that Angelina Jolie, जो आप देख रहे हैं, it's not the actual ones. So he has most of her organs replaced, right? So what the people are doing, they are going with these technologies, they're scanning their own genes and genomes and trying to find it कि आगे आने में उनके साथ क्या problems हो सकते हैं. So here we just stop. So we have those sequencing technologies which are generating those data. The thing is called as DNA sequencing, and they generate huge amount of data, and that data should be utilized and analyzed in research. How we use this data in like how we use artificial intelligence or machine learning on this data, that there are different applications in which we can utilize them. आगे sound, right? गोली थी. Thank you so much. पहले नहीं थी. Bingo. I like that boy over there. Anyways, so if you guys are familiar with how this thing works, DNA makes RNA, and then RNA makes proteins. What you can see here on my body is all what we call it as proteins. Gosht protein hai, skin protein hai, hair protein hai, nails protein, right? So protein is basically the structural unit on which living beings are made, as well as functional units. मेरे बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट कर रहा है वो क्या है जी? एंजाइम स्टमक में जो आपने शायद पढ़ा होगा, पैप्सिन, ट्रिप्सिन, ये पेप्सी वर्ड ना, क्या कहते हैं वो शादियों में खाने के बाद बोतल भी सर्व की जाती है, हम इसको बोतल कहते थे बचपन में. अब आप लोग क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट ड्रिंक, because you guys are soft, right? And then in America or Australia they call it as sodas. Soda वो soda water नहीं, वो जो रेडी वाला देता है. This thing is called as soda, right? And nobody called hard drink or soft drink, because drink means that drink, right? It is not halal. Don't ever think of it, right? So anyways, always. So DNA or genome is then translated into those proteins. So the information within that DNA should be incorporated into your body like something which we call it as proteins. So those proteins are made up of amino acids. Okay, DNA is made up of ATGCs, nucleotides we call them, nucleotides. DNA is made up of nucleotides. How many of them? 4. DNA में है ATGC. RNA में T नहीं होता, एक और होता है उससे मिलता जुलता, it's called as uracil. Just to distinguish कि ये DNA and RNA है. ठीक है जी? So DNA makes RNA. The information in the DNA is transcribed into another molecule called as RNA. This process is called as transcription. Transcript प्रिंसिपल बैठे हैं अपने ऑफिस में, वो एक नुस्खा सा बना के देते हैं. जैसे मिलिट्री में आपको पता है कि डायरेक्ट बातचीत नहीं होती, कोड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, स्पेशली इन वार एरियाज, राइट? So that's code. Then that information is decoded. So RNA is that something in between, जो वो मैसेज को, सिग्नल को आगे लेके जा रहा है. इट्स इंटरमीडिएट पार्ट. प्रिंसिपल ऑफिस से नहीं आता, वो बाहर नहीं निकलता. या आपके रेक्टर साहब मोस्टली ही इज इन हिज हेडक्वार्टर्स. अगर वो आके शहजाद को, मुझे हर एक को इंटरेक्ट करना शुरू कर दें, ऑब्वियसली ही हैज लॉट मेनी जॉब्स टू डू. So there are the deans there. There are the principal के नीचे, sorry, प्रिंसिपल तो आपके इस इदारे इस सेटअप के हुए ना, तो रेक्टर साहब के नीचे क्या होंगे? आपके प्रो रेक्टर्स, एंड देन डीन्स, एंड देन योर प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल बोले तो, डीन बोले तो, वो आपने मुन्ना भाई MBBS एक मूवी लगी थी, देखी? डीन बोले तो उसको समझाने के लिए ना, आम देहाती बंदा होता है, इज अ जगह देयर इन दैट कैरेक्टर. संजय, इट वाज एक्चुअली
an English movie, क्या नाम था उसका? उसका ये Indians आपको पता है, they're good in making the replicas. चरबासाजी बोलते हैं इसको. Paul Adams. Paul Adams was a Hollywood movie in which there is somebody of our age explores that I think he should have been a doctor, a medical doctor. So he joins a medical school. If you can afford right now, you can just join medical school. Pakistan में एक तो ना age restriction लगा देते हैं. My physician, or there they call physician, in University of Illinois, he was really good. I said, how long you were? You seem like very experienced. मैंने कहा आप कब बने? उन्होंने कहा मैं तो 2-4 साल पहले बना हूँ. उससे पहले आप क्या कर रहे थे? He said I was in military service. So after retired, I realized हमारे क्या 60 साल पे रिटायर हो गए, बस अब आप अल्लाह अल्लाह करें, आखिरत की तैयारी करें, निकलें इधर से. Right? So over there, obviously, they have different lifestyles. So they explore, yeah, I think I should be a better engineer, or I should be a better doctor, or maybe you can go to music, or maybe you can try something else or different. And most of them, they do that and they do it well. Anyway, so DNA makes RNA, मैसेज कैरी करके लेके जा रहा है. Then RNA will make protein. अच्छा, by the way, जो हम लोग काम कर रहे हैं, it's called as genomics. Genomics, genomes about DNA. Transcriptomics about RNA. The proteins are called as, अच्छा अगर आप मैसिव स्केल पे एक चीज को कर रहे हैं तो genomics. पहले टर्म यूज होता था genetics. आपके बचपन में शायद आपने पढ़ी हो या सुनी हो. You work with 1, 2 or 3 genes or just one chromosome. Now you take the whole genome, all chromosomes, all chapters in the book of life. See, letters हैं, ATGCs, and they make the words, right? Patterns बनते हैं उनसे. 6-letter words, 8-letter words, ठीक है? Patterns. And they then put together into what we call them as genes. तो genes क्या है? वो DNA का वो वाला portion that is giving you some product. Okay, like railway की lines हैं from Khyber to Karachi, पटड़ियां हैं, ये DNA भी वही मिसाल है. But you reach at some stations जहाँ पे कुछ activity होता है, तो कैसे पता लगता है कि आगे स्टेशन आ रहा है? Get some signals. आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नजर आता है, आगे चलते हैं कुछ समोसे पकोड़े वाले, books, coolies, and then you realize there is a station coming in. So same way we track this DNA. First we sequence that, then we track it, we go all across, and then we find different patterns, and then we realize कि यहाँ पे ये genes मौजूद है. ये इनका नॉर्मल सीक्वेंस है और ये एबनॉर्मल है, ठीक है? और इस एबनॉर्मल सीक्वेंस के वजह से दिस डिजीज कैन हैपन. सो दिस हाउ वी वर्क ऑन देम, राइट? So genomics if you deal with DNA, transcriptomics if you deal with RNA, right? But here is another thing that comes in. DNA made RNA, RNA was to make a protein, right? But there is another guy that comes in. It's called as microRNA. एक छोटा सा ना RNA जो कि उस RNA के ऑपोजिट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है. जहां जहां उनमें A's हैं, उनमें T's हैं, जहां जहां उनमें G's हैं, उनमें C's हैं, and other way around. So this thing then comes and entangles with the RNA, the original transcripts, and it does not let this main transcript perform its normal function. जैसे प्रिंसिपल साहब ने किसी को चिट दिया कि ये काम करना है, रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, तो छोड़ो यार चलें बर्गर शर्गर खा के आते हैं, जरा वो क्या है बाहर आपके मैकडोनल्ड्स पे चलते हैं, राइट? तो दैट गाय इज माइक्रो आरएनए. समटाइम्स इट्स अ गुड गाय. अगर ये किसी कैंसर जीन का कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहा है, ये आरएनए ये उससे आ रहा है, बेसिकली ये रेप्लिका होता है ओरिजिनल जीनोम या डीएनए का. So that microRNA is stopping him. So it's a good guy. So that's why these things are used in medicines. COVID या कोरोना वायरस से आया था, it's an RNA virus, right? So उस RNA के against they tried to develop microRNAs. So that was utilized. Epigenomics is some proteins they come and attach with that DNA and does not let it function or modifies its function or changes its function. So that thing is called as epigenomics. Okay, so genomics है, epigenomics है, microRNA है तो meronomics. Here the word is omics, 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 right? ICS, intermediate in computer sciences, similar to that. Something from statistics will be used, something from physics will be used, some equations from mathematics will be used. Everybody will get together. We all get together, the engineers, the computer scientists, right?
the biologists, the medical doctors. So that's how those things are solved together. What is more important here? What COVID teaches you? Life. जान है तो जहान है, जिंदगी. तो दैट्स व्हाई इससे पहले भी हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में जब हम गए तो हमारे इवन मटेरियल साइंस के दोस्त, हमारे कंप्यूटर साइंस के दोस्त, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जानने वाले, मोस्ट ऑफ देम वी वर वर्किंग टुगेदर कोलैबोरेटिव ऑन द प्रोजेक्ट्स. राइट. पाकिस्तान में प्रॉब्लम इज लाइक वी आर सुपरस्टार्स. आपने फास्टेस्ट 50 करनी है, पाकिस्तान जाए भाड़ में, जीते या हारे. ये हमारा एक नेचुरल बन गया ना. वी आर लाइक हीरोज. एनीबॉडी हु कम्स एट द टॉप, मेरे जैसा कोई नहीं है. स्मार्ट, हैंडसम, है जी. समझ गए होंगे आप. राइट. तो एनीबॉडी हु कम्स एट द टॉप, he thinks like nobody is like me. We try to be superstars. भाई बाकियों को भी साथ लेके चलना है. कप्तान से फर्क नहीं पड़ेगा, टीम भी चाहिए. तो टीम भी साथ में आपको एक अच्छी डेवलप करनी है. ओवर देयर दे आर टीम्स, दे प्ले लाइक टीम्स. इंग्लैंड है, कितने अरसे बाद जाके वर्ल्ड कप जीता, बट ऑलवेज प्लेड लाइक अ टीम. न्यूजीलैंडर्स प्ले लाइक अ टीम. साउथ अफ्रीकन्स दे प्ले लाइक अ टीम. पाकिस्तान नहीं, मैंने फास्टेस्ट बॉल फेंकनी है और वो आगे से वो सचिन भला सिर्फ ऐसे दिखाता था, वो पीछे थर्ड मैन पे छिक्का लग रहा है. यार हालत है कोई. सब समझ तो गए होंगे. और फास्टेस्ट 50 करनी है, टोला हमारा आउट. वही सुकून से ठंडे दिमाग से खेलो, जावेद मियां दाद की तरह, या इवन इनके दौर में जो 92 वर्ल्ड कप आपने देखी होगा ना. तो प्लान करके चीजों को, राइट. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अल्लाह के आसरे पे. प्लीज अगेन Dr. Iqbal Chaudhary from ICCBS, Professor Ata, mainly chemist हैं, but he realized कि genomics और DNA और NGS ये बहुत बड़ा आने वाला फील्ड है. तो thanks to him, इन्होंने अपना जो सेंटर था, which was HEJ, Hussain Ibrahim Jamal Institute in Karachi University, donated by some good people of God. Karachi में there are many generous people. इस्लामाबाद पिंडी में इधर मैंने वो ट्रेंड नहीं देखा कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए एक बिल्डिंग बना दी जाए या कोई आप लैब डोनेट कर दे. बट कराची हैज रियली गुड पीपल ऑफ गॉड. तो समबडी नेम्ड एज हुसैन इब्राहिम जमाल, उन्होंने प्रोफेसर अता साहब को एक सेंटर बना के दिया था, एंड दैट बिकेम वर्ल्ड क्लास सेंटर इन केमिस्ट्री, HEJ. लेटर ऑन जिनोमिक्स को भी इन्होंने बीच में जगह दी, बायोलॉजी के लोग भी. तो सेंटर फॉर जमीलो रहमान सेंटर फॉर जीनोम रिसर्च विच प्रोफेसर ओन फंडिंग, उन्होंने खुद डोनेट किया उसके लिए. एंड Panjwani Center for Molecular Medicine and Drug Design. So they put all of them together. Now it has become ICCBS, International Center for Chemical and Biological Sciences. And the first genome that was sequenced of Professor Zone, he donated, right? And then they realized that Pakistani genome में ये चीजें हैं, ये similarities हैं, ये differences हैं with the genome which the world sequenced. Overall, the world, we have a repository called as NCVI. वहां पे जो पहला जीनोम सीक्वेंस हुआ था, द प्रोजेक्ट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. बिकॉज ऑफ दैट दे सीक्वेंस द होल DNA ऑफ ऑल chromosomes of the body. ठीक है, they took like 5 to 10 different individuals from different parts of the world and they sequenced their DNA and the genome. From where this thing actually started, this bioinformatics got a boom, everything got a boom, right? And people started thinking about life and its problems and its improvements seriously. Okay, but in Pakistan, again, the credit to Professor and Iqbal Chaudhary साहब जो अभी ComStack के हमारे coordinator general भी हैं, right? And this ComStack is a lovely institute on, where is it? आप अगर वहां जाएं तो you can just see through the windows of Prime Minister House. इसकी टॉप पे आप प्राइम मिनिस्टर हाउस बैक पे हम लेके पिक्चर ले सकते हैं. We took that. So it's on शारा दस्तूर, क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपका सेनेट है, असेंबली है. That building is right there. So we will be having different activities soon. After we are done with this, we are expecting Professor Silvano from ICB. आप ये इस कोर्स में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपने हमें 4-6 अच्छे पीस सजेस्ट करने हैं. आई डोंट वांट बिगनर्स वहाँ लेके जाना, क्योंकि ही हैज अ वेरी प्रीशियस टाइम. ही इज कमिंग टू इंडिया. आई रिक्वेस्टेड हिम कि आप इधर से भी होएं, एंड ही हैज हिज ओन फंडिंग. हमने उसको तेला भी नहीं देना, उसको सिर्फ मेहमान नवाजी करनी है. सो इट बी हियर आई थिंक इन नवंबर, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द थिंग्स. ये साथ में मैंने कहा आपको थोड़ा और भी. ये एक सेंटर है कराची. आप ऐसे तो कराची के हैं, पेरेंट्स हैं वहाँ के, फैमिली, पेरेंट्स, नाना दादा, ओरिजिन.
So that's world-class center, ICCBS, International Center for Chemical and Biological Sciences. They have these sequencing machines, facilities. I think they are there in your ASAB also. Maybe koi inke paas bhi, I don't know exactly. Previous Sanger sequencers the shayad inke paas. We have one set up at Armed Forces Institute of Pathology. One of the sequencing machine is there, right? So those machines, they will soon start working on the local populations, unka genomic DNA, uska sequencing, and then so here I just stop and just give me maybe 15-20 minutes when we resume. Okay, Sadia can come here and give them the instructions about collab. Tea is ready? Refreshment is ready? चल तो हम एक ब्रेक लेते हैं उसके तरह मिलते हैं थोड़ा सा डिलेज आए क्योंकि आई वांटेड टू हैव योर इंट्रोडक्शन तो वो वाला टाइम आपने जरा मुझे वापस देना है जस्ट 15-20 minutes more. Thank you so much. Online people, any questions, concerns, queries? Let us know, or maybe you can discuss. I can stay here. You guys can proceed for your tea break. आपको हम अपलोड कर देते हैं, आप डाउनलोड करके रिफ्रेशमेंट्स कर लें ऑनलाइन वाले. जी आवाज आ रही? Any concerns? No, sir. You got some of it or most of it? Yes, sir. I'm sorry, my style is bit informal. So try to engage, especially the ones who are physical, but online wale neglect ho jate hain. But if you have any issues, I can stay here and take your queries. Chat window khul. Chat. Anything there? No? Can you please share the program schedule? जी जी शहजाद साहब आपके साथ अभी ये शेयर करते हैं प्रोग्राम शेड्यूल भेज दें जी जी थैंक यू सो मच कर दिया ओके जी जी I'm here if you have any comments or queries or concerns. The online people. Just post in the chat back and we are around.